हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम देखेंगे एक एक अगेन अ रियल एस्टेट प्ले। मेरा जो लास्ट वीडियो था वो निर्लॉन के ऊपर था, जो कि एक गोरेगांव मुंबई में एक आईटी पार्क मैनेज करने वाला बिजनेस था। वैसे ही लेवल पे एक सिमिलर बिजनेस देखेंगे जिसका नाम नेस्को है। नेस्को के बारे में हम समझेंगे। आई थिंक नेस्को जो है वो निर्लॉन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नेस्को के पास सिर्फ रियल एस्टेट प्ले नहीं है, उसके पास और भी कंपोनेंट्स हैं। उसके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन सेंटर्स है इंडिया में, जो कि बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर के नाम से जाना जाता है, बीईसी। उसके पास जो उसका जो कोर बिजनेस था वो इंजीनियरिंग से स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी 8% इन FY 25 उसका कंट्रीब्यूट करता है। और इसके और भी बिजनेसेस है, फूड बिजनेस है, एग्जीबिशन बिजनेस है, जो उसके आईटी पार्क्स हैं, उसके इन हाउस फूड ब्रांड्स हैं। और ऑल्सो दे हैव ऑनबोर्डेड अ लॉट ऑफ फूड अदर फूड ब्रांड्स ऑन टू देयर लेबल एंड दे आर केटरिंग टू द आईटी पार्क दैट इज देयर। तो इस बिजनेस के बारे में थोड़ा समझेंगे। इस बिजनेस का जो रियल एस्टेट है वो टिपिकल रियल एस्टेट जैसा नहीं है। जैसे डेवलपर्स क्या करते हैं कि वो माडा का या MMRDA का लैंड लेते हैं, उस पर रियल एस्टेट डेवलप करते हैं। ये इनके पास जो रियल एस्टेट है ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। इन्होंने रियल एस्टेट बहुत पहले लिया हुआ था गोरेगांव में, और इस रियल एस्टेट को अभी ये मोनेटाइज करेंगे। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि इनका जो रियल एस्टेट है, जो कोर कंपोनेंट्स है, अगर उस सबको ऐड करें तो इसके मार्केट कैप से कई ज्यादा है। तो इनका में हम देखेंगे इस कंपनी का जर्नी, कैसा इनका जर्नी रहा है, हाउ दे स्टार्टेड आउट एज ए इंजीनियरिंग कंपनी एंड हाउ दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू दिस रियल एस्टेट प्ले एंड आल्सो एंटरटेनमेंट प्ले। परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एट अ ग्लांस। प्रॉपर्टी का लेआउट देखेंगे, जो उसका प्राइम प्रॉपर्टी है गोरेगांव में, वो उसका विसिनिटी कहाँ पे है, कितना एरिया है, और मेट्रो एयरपोर्ट और ये सारी चीज़ों से कितने दूर है। इनके मार्क्यू क्लाइंट्स देखेंगे, ऑक्यूपेंसी रेट्स देखेंगे, कंट्रीब्यूटर ऑफ ईच सब सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस टू द ओवरऑल बिजनेस वैल्यू रेवेन्यू, वो देखेंगे। और फिर थोड़े और चीज़ें देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, और शेयर होल्डर ब्रेकअप, फ्री कैश फ्लो, और डेट कितना है। इनफैक्ट डेट है नहीं बुक्स पे, तो दैट्स अ ग्रेट साइन. What I also really like about the business is the high OPM percentage. OPM percentage is sitting around 60 to 70, 60, 58 to 60%. तो वो सारी चीजें देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो काफी एक्साइटिंग वीडियो रहने वाला है। तो प्लीज डू स्टे विथ मी राइट टिल द एंड ऑफ द वीडियो। डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून फॉर दिस एडिशन। तो इसका जो जर्नी स्टार्ट हुआ था, एक जो इनके प्रमोटर्स हैं वो गुजराती फैमिली से हैं। फाउंडर जो इनके हैं, जेवे जेवी पटेल उनका नाम था। दे स्टार्टेड द स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कंपनी राइट बैक इन 1939। कंपनी का पब्लिक इशू 1958 में आया था, जो ओवर सब्सक्राइब हुआ था उस समय। और 1962 में न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कंपनी का जो फाउंड्री था, जो जो वर्कशॉप था, वाज नोन टू बी द लार्जेस्ट फाउंड्री एट दैट टाइम। तो इनका जो ये एक बिजनेस है इंडबरेटर, ये जो इंडबरेटर है ये क्लोज टू 7% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू पे। तो ये 1964 में देखेंगे कि अब ये शेप लेना शुरू हुआ था। अम, फिर ये लोगों ने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया 1986 में। 1992 में 2 लाख स्क्वायर फीट का बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर डेवलप हुआ, लार्जेस्ट सेंटर फॉर एग्जीबिशन द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। इसका एक फन फैक्ट ये है कि अमित शाह के पास भी नेस्को के शेयर्स हैं। सो दैट इज, ऑल्दो इट्स नॉट इन द top 5 to top 8 holdings that he has, but he has a good chunk of money in invested in Nesco. फिर इनका जर्नी में थोड़ा रीब्रांडिंग आया। इन 2001 कंपनी ने रीब्रांड किया अपने आप को नेस्को लिमिटेड के नाम पे, डाइवर्सिफिकेशन किया, थोड़े बिजनेस वर्टिकल्स ऐड किए। 2013 में इन्होंने नेस्को आईटी पार्क लॉन्च किया, जिसका 6.6 लाख स्क्वायर फीट का चार्जेबल एरिया हुआ था, लाइसेंस टू मार्क्यू एमएनसी क्लाइंट्स। 2016 में इन्होंने नेस्को फूड्स स्टार्ट किया। जो नेस्को फूड्स है उसमें क्लोज टू आई थिंक 5 to 8 ब्रांड्स है जो इन हाउस हैं, जो इन्होंने डेवलप किया है, जिनका कैप्टिव एक ऑडियंस है आईटी पार्क का ही। तो वो डायरेक्टली आईटी पार्क को केटर करते हैं। और बाकी जो ब्रांड्स हैं इन्होंने ऑनबोर्ड किए हैं, जो बिग बिग ब्रांड्स हैं। आई थिंक जेमी ओलिवर का भी ब्रांड प्रपोज्ड है इसमें एनरोल होने के लिए। और पंजाब ग्रिल और ये सब मार्क्यू ब्रांड्स भी इनके साथ एसोसिएटेड होने वाले हैं।
फिर नेस्को इवेंट्स का भी इनके पास है बिजनेस, जिसमें इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी हैं, एग्जीबिशन, प्राइवेट इवेंट्स और ये सब सेंटर्स भी हैं। तो 2019 में इन्होंने लॉन्च किया नेस्को IT Park Tower 4, which is 11.2 lakh square feet chargeable area licensed to reputed MNC clients। तो ये जो टावर है, इनके पास जो लैंड बैंक है, कंटिन्यूसली ये लोग डेवलप कर रहे हैं। तो एक स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके पास कितना लैंड एरिया है, उसमें से इन्होंने कितना चार्ज किया है, कितना प्रपोज्ड है और कितना इनके पास बचा है। तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि जो इनका 8,300 या उसके इन एंड अराउंड जो मार्केट कैप अभी फ्लोट कर रहा है, वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। In 2023, it was recognized as one of the top 10 brands in real estate by CEO Insights। 2025 में स्ट्रेटेजिक फोरे इन्होंने किया वेसाइड एमिनिटीज में, जिसमें इन्होंने 400 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है। तो दिस कैन बी क्वाइट आई थिंक रिस्की प्रोपोजिशन। अब ये वेसाइड एमिनिटीज वही है कि हाईवेज में आपके एक तरीके से वन पॉइंट पे पेट्रोल पंप, रिफ्यूलिंग स्टेशंस, रेस्टोरेंट्स और सारी चीजें एक ही, और अकोमोडेशन। तो जैसे मोटेल का जो सिस्टम है यूएस में, तो वो सिर्फ मोटेल और अकोमोडेशन के लिए, बट दिस इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर कार्स स्टॉपिंग इन द हाईवे। तो ये एक इन्होंने अपने फ्री कैश फ्लो को इस पे डाइवर्ट करने की का डिसीजन लिया है। तो दैट नीड्स टू बी सीन वेदर दिस कैपिटल एलोकेशन विल रीप देम बेनिफिट्स। अकॉर्डिंग टू मी इट्स क्वाइट अ रिस्की मूव। 400 करोड़ देखा जाए तो इनके प्रायर कैश फ्लो जो एक्यूमुलेट हुए हैं, फ्री कैश फ्लो, उसके हिसाब से ये उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। बट फिर भी मुझे लगता है कि दिस कैपिटल कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड मोर स्मार्टली देन अ वे साइड एमिनिटी बिजनेस। तो यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस एट अ ग्लांस देखेंगे, तो आप एक सबसे स्ट्राइकिंग चीज जो हमें दिखता है कि बहुत कम बिजनेसेस में वो देखने को मिलता है कि टोटल इनकम टू पैट का रेशियो अगर आप देखेंगे 845 के टोटल इनकम पे 375 का पैट, मतलब विच इज लाइक काइंड ऑफ अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप कंपनीज। एबिटा, ज्यादातर स्टार्टअप कंपनीज एबिटा प्रॉफिट्स दिखाती हैं, बट इनके एबिटा प्रॉफिट्स इज वेरी क्लोज टू द टोटल इनकम। अगर आप देखेंगे तो 845 करोड़ का टोटल इनकम है और 551 करोड़ का एबिटा है, विच आर वेरी हाई लेवल्स बिकॉज इट हैज ऑलरेडी सेट द रियल एस्टेट प्ले एंड विच इज अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ओन्ड होनली बाय नेस्को। इनको जो भी डेवलपमेंट करना होता है उसके लिए इनको बीएमसी से परमिशंस लेने पड़ते हैं। तो आगे देखेंगे, आई थिंक इन वन ऑफ द टावर्स दे हैव रिसीव्ड एन इनिशियल अप्रूवल फ्रॉम बीएमसी, तो वो देखेंगे। बट पॉइंट यही है कि एक तरीके से एक बहुत बड़ा लैंड बैंक होने का फायदा इनको फ्यूचर में दिख सकता है, और ये एक ऐसा प्ले है जो मेरे को लगता है कि people should watch out for। Obviously, it's not a stock recommendation। I do have vested interest in terms of investment within Nesco, but I'm in no way saying that you should invest in Nesco. I feel you should check out Nesco. You should see what the facts are, what the values are, and constantly keep evaluating, and then take your call accordingly। तो पैट यहाँ पे देख रहे हैं, और ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो मैं कह रहा था, तो FY25 इन इटसेल्फ दे जनरेटेड कैश वर्थ ऑफ 348 करोड़। जैसे मैंने आपको कहा था वेसाइड एमिनिटीज में ये 400 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, बट ये जो कैप कैश जो जनरेट कर रहे हैं वो इसका 1 ईयर का कैश जनरेशन है। तो अगर अक्यूमुलेट करें प्रायर कैश जनरेशन को, यहाँ पे 376, 348, 296, 163, तो इन अ वे काफी बढ़िया प्ले है इसका। जो मैंने निर्लॉन का लास्ट टाइम किया था, तो निर्लॉन का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इनसे, मतलब जो डेट उनके बुक्स में था वो काफी हाई था, स्टिल दे वर गिविंग 4 to 4.4% डिविडेंड यील्ड। निर्लॉन नेस्को hasn't yet started distributing the cash because it feels that it can utilize the cash much better than rather than distributing it back to the shareholders। And that is an interesting thing that needs to be seen, because I don't like a business sending out cash to a shareholder, because I believe अगर बिजनेस को कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि वो कैश एक शेयर होल्डर से बेहतर यूटिलाइज कर सकता है, देन इट शुड कीप इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस and growing the value of the business। So if the value of the business would grow, ideally, logically, in the long run, the price of the stock also should follow value. In the short run, anything can happen. The value can keep increasing, but there may be price fluctuation। A big FII को लगा कि हाँ ये बिजनेस उतने दमदार नहीं है या उसमें उतना दम नहीं है, तो इट हैज ऑल द राइट टू एक्सरसाइज इट सेल कॉल। बट इन द लॉन्ग रन द प्राइस शुड
generally tend to follow the logic. A lot of times it doesn't happen, but majorly high probability that it will tend to move towards um, good value, increase in good value, and prices should tend to increase accordingly. तो इनका 3 ईयर CAGR अगर देखें टोटल इनकम का तो 30.3% है, which is very high in terms of the growth rates that it is notching up on the total income, EBITDA as well, and the PAT as well, 25.6. And here what you're seeing is half year in 25-26, it has already achieved 485 crore. So if you go by the same run rate, 490, so it should be around 490, so 980. It should be sitting around 980 crore, which is higher than the 845 crore recorded for FY 2025. So this is the layout. I think one of the NESCO IT Park, NESCO Center, and here we can see that is located on the Western Express Highway. Um, Western Railway Station, Goregaon और राम मंदिर के सामने है. Mumbai Metro line is just steps outside the campus. There are two east-west corridors, namely Jogeshwari Vikhroli Link Road and Goregaon Mulund Link Road, proposed are within 1 kilometer of the campus. So this houses the IT parks business which you're talking about, the food business. You can see all the food court here, 1, 2, 3, 4 food courts, 5 food courts. So through these food courts, they have the in-house brand and also the outside brands which they have contracted, on which they do business. The food business did close to 115 crore of business, which was divided into exhibition, indoor, outdoor exhibition, and restaurants. So it that also is a business which is growing rapidly, and needs to be watched out for. So this is a very interesting slide according to me, because this basically lays out how much is the plot area for the reality, exhibition and events, and other plots that they have. And this Nesco reality, it shows that what is the existing consumed. So the existing consumed is 14%. So what we are saying is that the revenue is being generated from the FSI floor space index, which is being consumed right now, which is just 14%. 28% is proposed. So what is being consumed, double of that is being proposed. So you can get an idea of the revenue that currently there is and the growth that can happen over the years, because currently 14% FSI is being consumed, and more, so double of that is being proposed. So if we are doing a run rate of 845 crore worth of business, or 800 crore worth of business in the last year, if you go by that run rate, and obviously there'll be an incremental increase in the value of property and the let out rates, then should we, would it be safe to say that they could be doing 2400 crore worth of business in once the proposed towers are fully occupied? Do let me know in the comment section your thoughts on this. I'm no property expert. I'm just looking at the facts in terms of the values that is being shown. I may be way wrong and way off. And that's the beauty of having a community of like-minded people who would also teach me in the comment section. And I'm really open to hearing out from people who know more about this. And you can also look at the FSI future development, which is 58%. So they have a huge land bank with them. We will be inputting the land bank that is listed on their letters to on their BSE submissions. So we would be doing that on ChatGPT. So we'll be quickly evaluating using a more conservative estimate of 21,000 rupees per square feet for Goregaon, and looking at how much is the value of the total land bank that they have. Right? Not all of them are chargeable, or not all of them will be released soon, but just to see if there was a rough estimate or back of the envelope calculation, how much would that value hold? And even for Bombay Exhibition Centre, you can see that 20% of the FSI is existing or consumed, and 80% is future development. That that is a very strong slide to put. I think that pretty much says to the shareholders that we are here. You need to repose some faith on us, and we will deliver the value. But I would love comments on or if anyone wants to be a devil's advocate on this. It would be lovely to know your views as well.
So here within Nesco Reality, to Tower 3 and Tower 4, they are showing some of the marquee clients that are there. It did 366 crore worth of business year on year. It has grown by 15%. Half year September 2025, it did 198 crore worth of business, and there's been 11.5% in the same half year of last year. The client names that are there, some of the biggest clients in Tower 3 and Tower 4 is more financial related. So KPMG, BlackRock, Priceline, Playgame, India First Life, Apollo Financial, Sotexo. So pretty good mix of clientele that they have, and usually the occupancy rates are full to the brim because of the connectivity of the office and on the prime location that it is in Goregaon East. So here they're talking about the Tower 2. And Tower 2 here, you can see that they have received the intimation of disapproval. Now, this is from BMC for Tower 2 in IT Park. Now, intimation of disapproval को सुनने में ऐसा लगता है कि this has been rejected, but this is not a rejection. This is BMC saying that we pre-approve we approve your construction and we approve your Tower 2, but there are some changes that you need to make, of which we disapprove. Once you do that, you'll receive the full certification and the go ahead. So this is a थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है कि इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, और ये क्यों डाला है यहाँ पे, शेयर होल्डर्स को क्यों बता रहा है कि टावर 2 इज डिसअप्रूव, बट it is basically an initial approval, and they need to make a few changes so that the Tower 2 becomes fully operational. So Tower 2 has 5.01 million square feet of area, but we'll calculate the total area later on. So here we have a Bombay Exhibition Centre. Bombay Exhibition Centre, close to total area of 71,418 square meter. We've seen that only 20% of it is FSI of it has been utilized, so 80% is still to be utilized. And they did 174 crore worth of business in 31 March 2025. In the first half year of FY25 till 30th September 2025, they did 101 crore worth of business. That 101 crore worth of business has grown by 25% in the same period last year. So that's a huge growth. I think 25% growth is a huge growth number, I think, in terms of events and occupancy. Utilization, if you see, it's just 44% of the days. So we are talking about 20% of the FSI being utilized, and even that 20% which is being utilized, only 44% of the days it is being utilized. With India going towards uh, conference tourism, these are great signs, but we do also understand that there's also Geo World, there is also Adani, which is coming into this business. So this might see some competition, but I feel that if the total pie in itself grows, then this should benefit, and which is being seen in half year 30th September 2025 numbers. So this is another NESCO events that is there. So I think some of the events which were done are here. Amit Trivedi event, Lucky Ali event, some of the notable events. Then you had Zomato event, Sunburn Arena, Brian Adams. So some big events that have happened in NESCO events. They did a revenue of 26 crore. Total 41 events were held, and 26 crore was the total revenue that they generated from NESCO events. Income from operation, which has grown 56%. This I feel would be chunky. It would not be a high growth, continuous growth business. Events would be subject to chunkiness. एंड दिस इज व्हाट नेस्को फूड्स वी आर टॉकिंग अबाउट. तो नेस्को फूड्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके नेस्को ब्रांड्स हैं जो कि इन हाउस है. डेली डेली, इंडिक, चेटिनाड एक्सप्रेस, एंड दिस फूड जो हैं वो सारे इनके जो आईटी पार्क्स हैं उस तक रिस्ट्रिक्टेड होंगे. और जो एग्जिस्टिंग इनके पास ऑलरेडी हैं, ये बेरूट, हिचकी, सोशल राजधानी, ये सारे इनके आईटी पार्क में एग्जिस्टिंग हैं. जो एफसी ब्रांड्स हैं ये सारे हैं food court brands, so Subway, Domino's, BKG, Frankie, and everything. And upcoming, we have Punjab Grill and Jamie Oliver and these kind of brands which are slotted to come in. So 150 plus weddings were hosted last year, 25 plus venues, 9 states, 14 plus cities. So these are NESCO Foods highlights.
तो ये इनका इंजीनियरिंग बिजनेस है. इन FY 24-25 it did 50 crore worth of business, which if you put it in context of 845 crore worth of FY 25 business is not that much or contributing highly to the top line. But yeah, so in HY of 2026 they've done 18 crore worth of business. Not their prime focus area. The business जो start हुई थी वो इसी से start हुई थी, but now they have spun off into a real estate conglomerate. So this was the business I'm talking about, where they have decided to allocate more than 1 year of cash flow from operations last year into this business. I have my reservations against this. I believe the capital could have been deployed in much better things, but yeah, this is just my initial observation. I'm pretty sure the management would have thought through this, would have calculated the profitability and those kind of things on the paper. But on the paper sometimes is on the paper, until unless it plays out, and 3 years, 4 years down the line, we get to know what exactly is happening on this. Is when there will be some traction and some contribution from this onto the top line and bottom line, hopefully. But this is something which I would have abstained from doing if I was in the management. So